Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. ये जी हमारे पास बाइक जिसको हम दोबारा से रीअसेंबल कर रहे हैं और उस्ताद साहब आपके सामने लगे हुए हैं काम को। तो ये कैसे कैसे डेवलप हो रहा है और कैसे मतलब इसका सारा काम होना है, हम ये आपको साथ साथ बताते रहते हैं और आपको साथ दिखाते रहते हैं कि कैसे इसको असेंबल किया जाता है और कैसे इसको आप नया फैंसी बना सकते हैं। तो बाहर हमारे पास थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने इस जगह को मुनासिब समझा कि हम इसमें जो है ना बाइक को थोड़ा सा इसको खोल लें और यहाँ पे इसको रिपेयरिंग कर लें। ये हम साथ कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहिए, देखते हैं आगे प्रोसेस कैसे कैसे और एंजॉय करें। जी अभी हमने इसकी जो असेंबली वगैरह थी वो सारी हमने कर ली है। अब इसकी वायरिंग थी हेडलाइट की और सारी जो ये वायरिंग वाला है वो वायरिंग भी तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो बैक साइड है इसकी उस पर वर्क करेंगे और दूसरी चीज़ों पे हम अब काम करेंगे, वो भी आपको साथ दिखाते रहते हैं। वो भी आप देखते रहे अभी इसी हेडलाइट और सारी ये जो इसकी वायरिंग थी, असम्बलियाँ थी, क्रच केबल, ब्रेक केबल, रेस केबल और ये सारी मीटर केबल थी, हमने सारी इसको बिल्कुल फिट करके लगा दी है सारी।
अभी तो ये हम इसका जो बैक व्हील है उसको भी लगा चुके हैं, इसका ऊपर मडगार्ड है उसको भी लगा चुके हैं, इसकी जो सीट के नीचे जो इसका सीट चिमटा होता है वो भी लगा चुके हैं, और बाकी आगे जो काम हो रहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। जी ये हमारी गाड़ी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली, इसकी सीट भी आ चुकी है और इसका जो चैन कवर है ये भी आ चुका है, इसके टापे ये सारे सीट और सारा ये सारा काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और तो नेक्स्ट टाइम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट मोटरसाइकिल को हम कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं। तो हमारे साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।